तो आप देख सकते हैं आज मैं गूगल टीटीएस यूज़ कर रहा हूँ। सेटिंग्स यूट्यूब। और गूगल टीटीएस इसलिए क्योंकि आज मेरा ऑटो टीटीएस बहुत लैग कर रहा था। ठीक है, तो आपके लिए अगली वीडियो गूगल टीटीएस के साथ नहीं आएगी, अगली वीडियो आपकी ऑटो टीटीएस के साथ आएगी, एलोक्वेंस के साथ। ठीक है, तो जो लोग एलोक्वेंस प्रेमी हैं भैया आज आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, कल से एलोक्वेंस पर वीडियो रेगुलर आएगी। ठीक है, मेरे को खुद एलोक्वेंस चलाना पसंद है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ऑडियो गेम्स एसोसिएशन, जो ये कंपनी है जिसने बनाए हैं ब्लाइंड क्वेस्ट फोन और हेल हंटर फोन। आज हम देखेंगे इन दोनों गेम्स की सीरीज में जो फाइटिंग मैकेनिक्स आई हैं ब्लाइंड क्वेस्ट, उनमें डिफरेंस क्या क्या है, इनका एवोल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि ब्लाइंड क्वेस्ट और हेल हंटर ये दोनों गेम है, ये दोनों एक ही कंपनी द्वारा बनाया गया जिसका नाम है ऑडियो गेम्स एसोसिएशन। इसलिए आपको नरेटर की आवाज़ भी सेम मिलती है, यानी कि नरेटर यानी कि जो आपको बोलकर बताता है। और हाँ, जो नरेटर है वो दोस्तों एक नरेटर तो हैं, लेकिन उनकी जो वॉइस एक्टिंग है, जो वॉइस एक्टर हैं जिन्होंने ये डायलॉग्स वगैरह बनाए हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हेल हंटर गेम है इसको बनाया है कोई जियोवानी समथिंग करके कुछ नाम है उनका, जियोवानी करके। और ब्लाइंड क्वेस्ट के डेवलपर हैं आइवन वेंचुरी, यही नाम है ना, पता नहीं क्या है, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो दोस्तों ये जो गेम है, ये जो दोनों गेम्स हैं ये दोनों एक ही कंपनी ने बनाए हैं और ये दोनों प्ले स्टोर से रिमूव हो चुके हैं। क्योंकि ब्लाइंड क्वेस्ट का रीज़न तो ये है कि भैया इसमें पिछले साल से अपडेट नहीं आए थे, और हेल हंटर तो इससे पहले ही रिमूव हो चुका था, पता नहीं क्यों, शायद कंपनी बंद होगी या फिर पता नहीं क्या। लेकिन दोस्तों ये जो गेम्स हैं ये अभी आप देख रहे हैं और ये गेम्स बहुत अच्छे बने हैं। अभी ये जो प्लेएबल हैं ब्लाइंड क्वेस्ट फोल्डर, इसके अंदर आपको ब्लाइंड क्वेस्ट हेल हंटर फोल्डर। ठीक है, थोड़ा सा आज वो पता नहीं रियलमी वाली वाइब्स आ रही है सब चलाने की। सेटिंग्स मतलब यार गूगल टीटीएस यूज़ करने के बाद ऐसे क्यों लग रहा कि मैं रियलमी का फ़ोन पकड़ रहा हूँ, पता नहीं। हेल हंटर फोल्डर, ब्लाइंड क्वेस्ट फोल्डर। तो सबसे पहले हम ब्लाइंड क्वेस्ट वाले फोल्डर में चलेंगे और ब्लाइंड क्वेस्ट 1 को ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन, ब्लाइंड क्वेस्ट इन पेजर। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 गेम्स मिलते हैं, ब्लाइंड क्वेस्ट 2 द फ्रॉस्ट डेमन, ब्लाइंड क्वेस्ट 2, मतलब ये टाइटल्स हैं। ब्लाइंड, पहले मैं आपको तीनों के टाइटल बता देता हूँ। ब्लाइंड क्वेस्ट 1 द इंचेंटेड कैसल, ब्लाइंड क्वेस्ट 2 द फ्रॉस्ट डीमन, ब्लाइंड क्वेस्ट 3 द अवेकनिंग। तो पहले मैं आपको पेज 1 of 2 यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों इन गेम्स की स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा तो माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको जो है मतलब कि जो ये गेम्स हैं, अगर आपको इनको खेलना है तो ड्राइव का लिंक मेरे पास में है, आप मुझसे मांग सकते हैं, नहीं तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, उस पर बस अभी वेलकम मैसेज ही आया है, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा टेलीग्राम यूज़ करता नहीं हूँ। तो अगर आपको हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो दोस्तों उसकी लिंक एक्सपायर हो चुकी है, और मेरा जो डिस्कॉर्ड अकाउंट है वो बंद कर दिया मैंने। बंद इसलिए किया कि दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। देखो, मुझे चैट जो डिस्कॉर्ड पर जैसे आपका व्हाट्सएप पर होती हैं चैट्स, वैसे ही आपका डिस्कॉर्ड में होता है डायरेक्ट मैसेजेस। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज जो होता है वो आपका व्हाट्सएप चैट की तरह ही होता है, मतलब वहाँ से आपकी चैट ओपन हो जाती है, कोई भी आपको मैसेज कर सकता है। यूट्यूब। तो
तो डिस्कॉर्ड पर मुझे किसी का डायरेक्ट मैसेज का लिंक कॉपी करना था, ठीक है। तो भैया वो अब वेबसाइट से होता है, ऐप से नहीं होता, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो आप चैट का लिंक कॉपी कर सकते हो, लेकिन डिस्कॉर्ड पे नहीं होता है, ठीक है। डिस्कॉर्ड पर आपको नहीं होगा ये, तो ये बात है। और अगर आपको और हाँ, उसके लिए मुझे अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, और वहाँ पर मांग रहा था एग्जिस्टिंग पासवर्ड, और जो पासवर्ड आपको चेंज करना है, Tech assistant video. ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर वो मांग रहा था, मैं तो अपना पासवर्ड भूल गया अब, Tech assistant video AI. ठीक है। ये तो मेरा शॉर्टकट है, यहाँ से पैक कर लो भाई, Character words. Character action. Access. Scroll. ठीक है। ऐसे बैक पूरा हो चुका है। और इस वीडियो AI का शॉर्टकट मैंने क्यों बना के रखा है यार, अभी लेंस स्टॉक यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये क्रोम में टेक असिस्टेंट फॉर blind.com में जाएगा, Help. Play Store. ठीक है। अभी के लिए बैकग्राउंड के लिए मैं Blind Quest. Folder opened. इसके फोल्डर को ही ले लेता हूँ यार, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐप है नहीं, बस 3 ही आपको ऐप मिलेंगे। तो दोस्तों बात ये है कि जो डिस्कॉर्ड था, मेरा अकाउंट मैंने फ़ोन नंबर से अकाउंट बनाया था, ईमेल से नहीं बनाया था, ठीक है। तो ईमेल से मैंने नहीं बनाया था, मैंने फ़ोन नंबर से बनाया था। तो हुआ क्या कि भैया वो ईमेल मांग रहा था, मुझे फ़ोन नंबर का वहाँ पर बटन ही नहीं मिला, तो मैंने अपना ईमेल डाल दिया। तो उसी सेम नेम, उसी सेम यूज़र नेम, उसी सेम डेट ऑफ बर्थ से दूसरा अकाउंट बन गया दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने सर्वर पर गया, वो मेरा सर्वर नहीं है, हमारे फ्रेंड्स का सर्वर है। वहाँ पर मैं गया भैया, वहाँ से मुझे वार्निंग मिल गई कि आप अल्टरनेटिव अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने मॉडरेटर को बोला ये सब कि भैया मेरा अकाउंट गलती से न्यू बन चुका है, ठीक है। तो अब उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मॉडरेटर जी, अगर आप हमारी वीडियो देख रही हैं तो आपसे निवेदन है कि कुछ रिस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो दोस्तों हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक जब मुझे वापस ज्वाइन करना पड़ा अपने दूसरे अकाउंट से, तो दोस्तों वो लिंक हो गया एक्सपायर, हाँ लिंक एक्सपायर हो गया। और अब मैं सर्च वाले बटन पर जाकर अपना अकाउंट दूसरा ला भी नहीं सकता, बैकग्राउंड मैनेजर है तो सॉरी, मैं दूसरा अकाउंट से No actions. साइन इन नहीं कर सकता, उस सर्वर में वापस ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मुझे उसी नाम से दूसरा सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अब देखता हूँ मैं बना पाता हूँ या फिर नहीं। और उस सर्वर का तो पूरा सेटअप भी नहीं हुआ था भैया, कोई शेयर करने लायक ही नहीं था मेरे पास जिसको मैं शेयर करूँ, कोई डिस्कॉर्ड चलाता ही नहीं था, ठीक है। कोई डिस्कॉर्ड ही नहीं चलाता था यार, ये प्रॉब्लम है। और अगर आपको पता नहीं है डिस्कॉर्ड क्या है, तो ये व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप टाइप का, लेकिन इसमें आपको ऑप्शंस भर भर के मिलते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, मतलब अगर कोई मल्टीप्लेयर गेम जैसे आपका हो गया हैंड क्रिकेट, ठीक है। अब हैंड क्रिकेट पता नहीं वहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड से बात करने का मौका मिलता है या फिर नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि
हैंड क्रिकेट में तो आप ऐसे ही बात कर सकते हैं बिना डिस्कॉर्ड के, ठीक है। तो जो साइटेड वाले गेम होते हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं। और हाँ, माइनक्राफ्ट दोस्तों, ये जो माइनक्राफ्ट है ये साइटेड की गेम है और इसके अंदर दोस्तों आ चुका है स्क्रीन रीडर, जिससे साइटेड लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए जन्नत बन चुका है दोस्तों स्क्रीन रीडर। भैया स्क्रीन रीडर का सपोर्ट आ गया तो कोई गेम इनएक्सेसिबल कैसे हुआ, ठीक है। तो हमारे लिए मस्त चीज़ है और उन लोग के लिए नहीं, ठीक है। तो भैया स्क्रीन रीडर का सपोर्ट आ चुका, बहुत बड़ी बात है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, 29 रुपये का गेम है यार, ज़्यादा नहीं है। और लोकी क्राफ्ट 5 तो रिमूव हो चुका है प्ले स्टोर से, इसी साल रिमूव हुआ है, ठीक है। पिछले साल मैंने लोकी क्राफ्ट 5 खेलते हुए अपनी दिवाली बिताई है, उसी गेम में घूमते घूमते स्केलेटन मारते हुए। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, आपको अच्छे एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन होना ज़रूरी है, क्योंकि गेम के अंदर कहाँ से एनिमी अटैक कर रहा है, कहाँ क्या है, आपको उसके लिए हेडफोन होना ज़रूरी है। नहीं तो बिना हेडफोन के आपको समझ ही नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। मैं तो बिना ईयरफोन के खेल रहा था तो मुझे समस्या आ रही थी, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ईयरफोन ही इस्तेमाल करें, ईयरफोन अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपके पास में ईयरफोन नहीं है तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि अगर आपके पास में ईयरफोन नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास में कहीं भी किसी फैमिली मेम्बर का ईयरफोन है तो आप थोड़ी देर के लिए मज़ा ले सकते हो। और माइनक्राफ्ट ट्रायल तो बिल्कुल मत खेलिएगा दोस्तों, उसके अंदर आपको ट्रायल पीरियड मिलता है, उसके अंदर आपको क्रिएटिव नहीं मिलता, ठीक है। और क्रिएटिव मोड इसलिए क्योंकि उसमें भैया आप चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। चमचमाते डायमंड के ब्लॉक लो, उसका घर बना दो, फिर अपना मोड चेंज करके कर लो सर्वाइवल, फिर उसके बाद उसमें रहने लग जाओ। अब अगर आपने लकड़ी का दरवाज़ा लगा रखा है तो भैया रात को सावधान रहना, क्योंकि एनिमीज भैया ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो वो बात है, वीडियो बड़ी हो रही है मेरे बातों के कारण, तो कोई बात नहीं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओपन करेंगे ब्लाइंड क्वेस्ट को, Blind quest. ठीक है। ब्लाइंड क्वेस्ट को ओपन करेंगे, Landscape. Blind quest. यहाँ पर हम टॉक बैक, Welcome to Blind Quest, Talk the back off. Enchanted Castle. Swipe right to start a new game. Tap to listen to the credits. क्रेडिट्स अगर आपको सुनने तो मैं सुना देता हूँ। Blind Quest, a game by Massimo De Pasquale, directed by Ivan Venturi. Game design and programming by Massimo De Pasquale. Sound design and SFX by Mariana Morgia. Level editing by Simone Hu. Music by Max De Freya. Script by Pier Francesco Cantelli. Test by Kyle Morena. Voice by David McCallion. Administrative direction by Mirko Venturi. Special thanks to Stefano Enea Cabra and Tiziano Ferraro. An audio game made and produced by Audio Games Association. ठीक है, ये तो इसके क्रेडिट्स। तो अब हम गेम के एवोल्यूशन देखेंगे कि क्या गेम में पहले था और क्या है। Swipe right to start. Welcome to Blind Quest, Wayfarer. Are you ready to hear the story of Nathan the Mercenary? Well, get ready then. It's such an exciting adventure, you'll feel like you're experiencing it firsthand. Remember,
I'll need your help to reach the end of the story. Stay alive, if possible. Swipe right and left to explore the environment, forward and backwards. Use double tap to examine the interactive elements. Touch with 5 fingers to open the pause menu. During battle, tap 2 times to attack. Swipe left, right, or down to dodge. Swipe up to drink a healing potion, and tap once to hear Nathan's health amount. Great! Now that all that is clear, we can go. Our story begins in Nathan's room. The mercenary has just woke up, and his day is not going to be so good. ठीक है, You have reached door Nathan's room. एक बार मैं अपना मेन्यू Swipe left or swipe right to move. You opened the menu page. Nathan reached level 1. Press double tap to open the... You're back in the map. ठीक है। Window, casket, desk, casket. तो पहले इसके अंदर लाइफ पॉइंट्स वाला सिस्टम ही नहीं होता था। ठीक है, लाइफ पॉइंट्स नाम का कोई सिस्टम नहीं होता था। Desk, तो पहले हम देखेंगे casket, ये इनके अंदर आपको हीलिंग पोशन मिलते थे, पड़े रहते थे कास्केट। Nathan opens the casket. He gets a healing potion. Desk, cast, window, wall, door. It's not yet time to go out. Nathan needs his bag. The inn denies credit even to its usual customers. It's not yet time. Wall, window, cast, desk. On the desk is his bag. Nathan checks the money inside. Only 1 silver coin. It is enough for today, but tomorrow he will starve. It is probably time to have a look at the city bulletin board to find a new job. You opened the menu page. Nathan reached level 1. Press double. You opened the inventory page. You selected 1. Healing potion. Nothing. Nothing. Swipe. Nothing. You open. You're back in the map. Casket. Desk. Door. Nathan leaves the inn where he is staying. He must go to the central square, where he can find the bulletin board with available jobs. You have reached City of Flower. Commoner woman. Eastern, Southern, Nathan's room. South Nathan's room. Nathan's room is fairly basic. Mercenaries are not used to luxury. You have reached door. Nathan's room. Wall. Window. Casket. Window. Wall. On the wall there are some coats of arms and old weapons. Nathan is a mercenary, and he has collected a lot of odds and ends from the battles he has fought. Door. Wall. Window. इसका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। मैं वॉल्यूम पूरा फुल कर देता हूँ। The sunlight lights up the room through the window.
बताना आपको म्यूज़िक कैसा लगा। बहुत अच्छा म्यूज़िक है, ठीक है। अगर वैसे एक बात बताऊँ मैं, Casket. आपको अगर ये गेम डाउनलोड करना है तो कर लो भैया, लेकिन पूरा गेम आप खेल नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा गेम खेलने का मांगेगा पैसा। और अगर आप पूरा गेम खरीदने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 90 रुपए का गेम है। लेकिन अब ये प्ले स्टोर पर नहीं है ये गेम, तो वहाँ पर आपको एरर आ जाएगा। Window, wall, door, desk, door. हम जाएंगे डोर। You have reached Flower, city of commoner woman. Flower, the fields are full of crimson flowers. Flow owes its name to these fragrant plants. Commoner woman. ठीक है, ये वुमन है। The girl stares with a grim look at Nathan. Mercenaries have a terrible reputation. Eastern exit, southern exit, Nathan's room. Flower, common, east, southern egg, Nathan's, southern egg, eastern egg, southern egg. Nathan arrives in the city market, which is full of life in the middle of the day. But now it is quiet. You have rich shop, sit busboy, casket. Nathan opens the casket. He gets a healing potion. Busboy. A young busboy asks Nathan if he's a mercenary. Swipe left to say yes. Swipe right to say no. The busboy doesn't believe Nathan. Only mercenaries are heavily armed. Casket, busboy. A young busboy asks Nathan if he's a mercenary. Swipe left to say. With a disgusted glance, the busboy says mercenaries are monsters who kill for money. Casket, busboy. The busboy says that he doesn't talk to mercenaries. Casket, eastern, northern egg shop, northern egg. You have Nathan's room, city, southern exit. You have shop, bus, casket, eastern exit, bus, shop. Now it is closed. It is too early. Northern exit, shop. Now it is closed. It is too early. Busboy, casket, eastern exit. The city square is near a large fountain. In the middle of the unpaved yard is the bulletin board where jobs are displayed. You have laundress, water, laundress. The laundress tells Nathan that a Royal Herald has just put up a new job announcement. He seemed very agitated. Western laundress, water. There is a beautiful fountain. The flowers are able to grow thanks to the purity of the water. Bulletin board, casket, western casket. Nathan opens the casket. He gets a healing potion. Bulletin board. On the city bulletin board, there is an announcement written by the princess herself. It says that the royal city is infested by swipe left. Nathan needs money, but he does not like dealing with the dead. He is going to wait for something less scary and easier. Casket, bulletin board. On the city bulletin board, swipe left. A risky mission, but with a good reward. Nathan begins to walk. The stronghold is far from the city. Casket. Bulletin. There isn't really much more on the bulletin board. Better to... There isn't really much more on the bulletin board. Better to get to the princer. Casket. The casket is empty. Western exit. Laundress. Water. Bulletin board. Casket. Western exit.
You have reached Northeast Casket, East Northern Nathan's Roof, Southern City of East Southern Eastern. Nathan crosses the small city. There are not many people around. You have reached saving signpost, water well, eastern western eastern exit. Nathan arrives in the plain of Versia, which is a quiet and lush land. You have reached plain of Versia, west. Swipe left or swipe right. 2, move. Waterfall, dark cave, gravestone. अब देखना बड़े-बड़े बैटिंग की Bandit. The battle begins. Victory! Nathan gains experience points. Double tap to Waterfall. Dark. Grave tree trunk. Eastern, western exit. Eastern exit. Nathan arrives in an abandoned carpentry shop. The place is unused and has been taken over by nature. You have Wolf. Plain of the battle. Victory! Nathan gains experience points. Nathan gets a healing potion. Double tap. Cut. East, west, crumbling wall. Western, eastern exit. Nathan continues along the way leading to the stronghold. He asks himself if bandits might be hiding in the vegetation. You have tree. Plain of Versia. The battle begins. Victory! Nathan gains experience points. Nathan gets a healing potion. Double tree. Gamekeep. Lake. Bandit. Victory! Nathan gains experience points. Double tap to... तो दोस्तों ये था ब्लाइंड क्वेस्ट 1 का बैटल सिस्टम. Talk back on. Blind quest. Game view. Notification. Recent. 1. Blind quest. Activate. Close. Blind quest closed. Home. Portrait. Page 1 of 2. Default page. Folder closed. 1 UI home. Weather. In pager. ठीक है. तो अब हम देखेंगे ब्लाइंड क्वेस्ट 2. Blind quest. Folder. ब्लाइंड क्वेस्ट 2. Blind quest. Folder. Blind quest to the Frost Demon. Landscape. Blind quest to the Frost Demon. Game view. Out of pager. Welcome to Blind Quest, the Frost Demon. Swipe right to start a new game. Tap to listen to the credits. इसमें बहुत बड़ा अंतर है. पहला म्यूजिक चेंज हुआ. बैटल का भी म्यूजिक यही था. बैटल सिस्टम भी चेंज हुआ. Blind Quest, the Frost Demon. Written by Ivan Venturi and Massimo De Pasquale. Text by Ivan Venturi and Pier Francesco Cantelli. Audio and music by Mariana Morgia. Cover music by Max De Freya. Voice by David McCallion. Additional coding by Alessandro Carazza. Store icon art by Marco Sessa. Produced by Mirko Venturi. Directed by Massimo De Pasquale. Thanks to our testers, Tiziano Ferraro, Stefano Enea Cabra, Elia Grasselli, Manuel Bonini, Luke Hewitt, Piotr Machach, Joel Perez, and Swipe right to start a new game. Tap to listen to the credits. Blind Quest, the Frost Demon.
Written by Ivan Venturi and Massimo De Pasquale. Text by Ivan Venturi and Pier Francesco Cantelli. Audio and music by Mariana Morgia. मैं देख लेता हूँ Cover music by Max De Freya. चालू है ना Voice by Collapse. David Draw. McCallion. Button. चालू Draw. Additional Self- coding pause. by Button. Alessandro Carazza. Stop. Game view. Store Menu icon line quest to art the first by element. Marco Sessa. Produced Stop back by off. Mirko Venturi. Directed by Massimo De Pasquale. Thanks to our testers, Tiziano Ferraro, Stefano Enea Cabra, Elia Grasselli, Manuel Bonini, Luke Hewitt, Piotr Machach, Joel Perez, and Douglas Roberto. Copyright 2020 Audio Game Association. ठीक है Swipe right. मैंने Press Control for 2 seconds to skip the cutscenes. In the map, press left Alt key to hear combat instructions. The new battle system is here. During the fight, when the enemy attacks, he starts a combo. At the start of the enemy's turn, you will have some anticipation about the direction of his blows. But take care. An attack can be fast or heavy. A fast attack must be dodged by pressing the arrow of the opposite direction of the hit, and a heavy attack must be blocked, pressing the arrow of the same direction of the hit. You will be able to distinguish fast from heavy attacks based on their pitch. Fast attacks will be sharper, heavy attacks lower. Every 3 enemies blows, and at the end of the enemy's combo, Nathan can strike back. When the enemy completes a combo, the counter will increase by 1. When it's time for Nathan to strike back, he can do a heavy attack by pressing the down arrow, or a fast attack by pressing the up arrow. Nathan's offensive phase will last for a few seconds. Heavy attacks are slower and do more damage. Fast attacks are quick, but do less damage. Beware. To chain 2 fast attacks, you have to press the up arrow exactly at the moment of the end of the first attack. Welcome to Blind Quest, Wayfarer. Are you ready to hear the story of Nathan the Mercenary? Well, get ready then. It's such an exciting adventure, you'll feel like you're experiencing it firsthand. Remember, I'll need your help to reach the end of the story. Stay alive, if possible. Swipe right and left to explore the environment, forward and backwards. Use double tap to examine the interactive elements. Touch with 5 fingers to open the pause menu. During battle, swipe up to attack. Swipe left, right, or down to dodge. Tap 2 times to drink a healing potion, and tap once to hear Nathan's health amount. After a week of smooth sailing, Nathan arrives in the port of Willow City. He notices immediately ice sheets in the waters of the harbor. A very strange thing for a city that normally has a temperate climate and lush vegetation. Instead of this, there is naked trees, icy roads, and snow all over the roofs. Captain Buzzard, the vessel commander, tells Nathan that Kilius, the frost demon, cursed the city. He's using his terrible power to freeze the city. Because of this, the Ivy Queen, Willow City's governor, is looking for a champion to defeat him. Nathan thinks that it might be a good chance for him to obtain riches and glory. Okay. Guys, game To the square. Port of Willow City. Port of Willow City वाले पर कितने लोग हैं? ये हाथ है। Fisherman. मछुआरा क्या दे रहा है दोस्तों?
पहला बेनिफिट में ये आया है कि लाइफ पॉइंट्स आए हैं। अगर लाइफ पॉइंट का कोई मैं देता हूँ You opened the menu page. Nathan has 30 life points. 10 gold. Nathan reached level 1. Press double tap to open the inventory page. You're back in the map. Port of Willow City. ठीक है। To the Craft District. तो पहले जो इसमें आया कि आपको मिला, तो पहले मैं आपको इन्वेंटरी को दिखा देता हूँ। You're back in the map. Port. You opened the inventory page. No items in your inventory. Swipe up to go back to the menu page. Touch with 5 finger. Nothing. You're back in the map. Port of Willow City. ये To the square. Fisherman. The fisherman. Two fishermen. A strong fisherman greets Nathan as soon as he approaches him. The man knows the mercenary well. His deeds have crossed the oceans far faster than Buzzard's ship. The fisherman hands Nathan a flute, saying it is a sign of respect. तो जब बंदा भाई ऐसे का इसे बांसुरी कर दूँ, इस बांसुरी से आप पोर्टल To the square. To the Craft District. Docked. To the square. ठीक है। लाइफ और बैटल सिस्टम में The circular square of Willow City, with the statue of the Ivy Father King, covered by snow up to the legs. Only a few people are going somewhere, walking on the frozen porphyry pavement. You have reached Square of Willow City. ठीक है। पहले मैं आपको इसके बैटल सिस्टम का दिखा देता हूँ। Shop, Ivy, merchant, herdsman, good. To the Crossroad Temple. The end of the paved main road of Willow City, and the start of 4 earth roads leading towards the corners of the realm of the Ivy Queen. In the middle, the imposing building of the Willow Gateway, decorated with bolts plucked from defeated enemy ships in the last war. You have reached Crossroad Temple. To the entrance, to the square, to the entrance of the Red Cave. To the tree line of the Willow, the wide lowland is covered with snow. The tree line is a large and dark stripe of weeping willows with their snowy top. You have reached tree line, saving point, rock, saving point. अभी सेव नहीं करूँगा मैं। Rock, oak, snow on the ground, snow heaps, signs in the dead boar. To the rock monolith, dead boar. भैया बला To the rock monolith, a tall granite rock monolith, almost covered by snow and surrounded by blanched willow trees. Strange symbols carved on the rock. You have reached corpses in prayer. चलो आज बैटल करते हैं। The battle begins. Ice Buffalo. Enemies fast attack. Enemies heavy attack. Study enemy movements. The enemy's combo starts. Defend yourself. Is defeated. That is the end of swipe right to go back to the main menu. Talk back on. Swipe right Game view. to go back Window to the main Game view. menu. Window blind quest to the frost. Game view. Game view. Window blind collapse. Swipe right to go back Game to view. the main Pop. menu. Game view. Window blind quest to the frost. Game view. Window blind quest to the frost demon. Swipe right to go back to the main menu. दोस्तों वापस से करके दिखा Talk देता back हूँ। off.
Press Control for 2 seconds to skip the cutscenes. In the map, press left Alt key to hear combat instructions. The new battle Top map. system Blind is quest to the here. Frost Demon. During the fight, when the enemy Notification. attacks, he starts a Boom. combo. Page 1 of तो 2. दोस्तों Default इसमें page. आपको न्यू बैटल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1 था। recent. 1 blind quest. Close. Chat. Home. 1 UI home. Blind quest. Fold. Blind quest 3 the Ivy Queen. ठीक है, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। Landscape. Blind. कोई चेंजेस नहीं वैसे दोस्तों। Welcome to Blind मेरा Quest, favorite the Top map. Ivy Queen. Swipe left to continue a previous game. Swipe right to start a new game. पूरा गेम मैंने खेल रखा है, चलो। Blind Quest, the Ivy Queen. Written by Ivan Venturi, Manuela Bonini, Stefano Moscatelli, and Massimo De Pasquale. Texts by Ivan Venturi, Manuela Bonini, Stefano Moscatelli, and Pier Francesco Cantelli. Coding by Stefano Moscatelli and Massimo De Pasquale. Audio and music by Massimo De Pasquale and Federico Fabri. Cover music by Max De Freya. Voice by David McCallion. Store icon art by Marco Sessa. Produced by Mirko Venturi. Directed by Massimo De Pasquale. Copyright 2022 Audio Game Association. ठीक है। To the Red Cave. To the end saving point. To the entrance of the Living Forest. मेरे पास कितने लाइक पॉइंट देखा। You have reached. You opened the menu page. Nathan has 28 life points. You're back in the map. Entrance of the Living Forest. और गाइस एक ईस्टर एग मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेन्यू पेज खोलना है तो 5 उंगली से ही 5 उंगली से आप टाइप नहीं कर सकते। आप 5 उंगली से टाइप करके तो खोल सकते हो, लेकिन 4 फिंगर से भी हो जाता है। Saving point. मैं 3 उंगली से भी करके देखता हूँ। You opened the menu. You're back in the map. Entrance of the Living Forest. 3 उंगली से भी होता है, 2 उंगली से नहीं, 2 उंगली से नहीं होता, 3, 4 और 5 से होता है। Willow, allow fairies. To giant fur. To giant. You have giant fur, pink head, small. To patch. To the end. To patch. To patch. You have to the undergrowth. To the waterfall. To giant fur. Blue heads dead. Something of blueberries. The battle begins. Rabid boar. Enemies fast attack. इससे मैं आपको फाइट Enemies heavy attack. Study enemy movements. The enemy's combo starts. Defend yourself. Zero. Damage suffered. Attack. Victory. ठीक है, ऐसे आपको Nathan gets gold. 50. Nathan gains experience points. 210. Nathan increases his experience level. Nathan gets boar hide, boar tusks, double tap to. इस बार मैं देखता हूँ। You opened the menu page. Nathan has 155 life points. 505 gold. Nathan reached level 6. Press double tap. You're back in the map. Dead. Some blue to the water. To the under. To the waterfall. To giant. Blue heads. Dead. Blue to giant. You have reached to the entrance of the Living Forest. You have to the crossroad. You have a saving point. You saved the game.
You Welcome. Blind Quest. The Ivy. Blind Quest. The Blind Quest. Swipe left to continue a previous game. Swipe right to start a new back on. game. Notification shade. Recent. Blind Quest 3. Discord. Blind. Search Twitter. Blind Close. Advanced options. Discord. Home. Portrait. Page 1 of 2. Default page. Blind Quest. Hellhunter. Folder open. अब अपना काम है इस फोल्डर से क्योंकि अब इस गेम के हम लोग देखेंगे Hellhunter. Damn Soul. Collapse. Hellhunter. Antinorman. ठीक है, दो गेम्स है, हेल हंटर एंटीनोमन, हेल हंटर डैम। Hellhunter. Damn Soul. Hellhunter. Antinorman. हेल हंटर एंटीनोमन को पहले देखेंगे। और दोस्तों ये दोनों, और हाँ एक बहुत ही डरावनी बात बताऊँ मैं आपको। Battery 46%. गाइस जो हेल हंटर की जो गेम है ये एक रियल जगह पर बेस्ड है, ट्रांसिल्वेनिया। ये यूरोप साइड की कोई जगह है और जो ड्रैकुलास कासल जो गेम के अंदर है वो वहाँ एक्चुअल में है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच्ची बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है भैया। मैं इंटरनेट से देख के आया हूँ। तो दोस्तों चेयर हिली है, सॉरी, वैसे इस चेयर को साइड में रखूँगा, ठीक है। तो ओपन करेंगे ब्लाइंड क्वेस्ट, Hellhunter. नहीं ब्लाइंड क्वेस्ट नहीं, सॉरी, Hellhunter. Antinorman. हेल हंटर एंटीनोमन को। Landscape. Hellhunter. Antinorman. Game view. Out of pager. Hellhunter. Talk back off. Anti-Noman. Move among the New game. Exit game. ऑप्शन है New game. Load game. Credits. Exit game. New game. Load game. Credits. Hellhunter. Anti-Noman. A game by Giovanni De Vita, aka Tanker Rider. Game design by Giovanni De Vita. Programming by Giovanni De Vita and Massimo De Pasquale. Story by Giovanni De Vita. Sound design, SFX and music by Giovanni De Vita, Mariana Morgia and freesound.org. Test by Tiziano Ferraro, Enea Cabra, Douglas Gallo, Joel Paras, Manuela Benini, aka Sanzef, Riccardo Vecchi and Giovanni De Vita. Voice by David McCallion. Store icon art by Laura Ciccardi. Administrative direction by Mirko Venturi. Mobile porting by Matteo Maniconi. More Games Studio. Special thanks to Marta Capoletto, Andrea D'Angelo, Elia Grasselli, and Caterina De Santis. An audio game made and produced by Audio Games Association. ये भैया हो इसके क्रेडिट। Move among the options at exit game. New load game. लोड गेम नहीं करूँगा मैं, New game. The story of Elian, the vampire hunter, is about to start. You can skip cutscenes double tapping for 2 seconds. Move among the options in the pause menu with swipe left and swipe right. Then tap 2 times to select an option. Swipe right and left to explore the environment, forward and backwards. Use double tap to examine the interactive elements. Touch with 5 fingers to open the pause menu. During battle, double tap to attack. Swipe left, right or down to dodge. Swipe up to drink a blood vial. Very well. That is all you need to know in order to survive. Good luck. Our story takes place in our days, in a place located somewhere in Transylvania. In a world where technology has spread worldwide, mankind can't even imagine that vampires and all the creatures of the night actually exist. Some of them even manage to integrate into society. Elian is a Dampier,
the son of a vampire and a human. He became a vampire hunter a long time ago. Now Elian is inside the pub of a village. After a long career as a vampire hunter, the day has finally come. Today, Elian will hunt Dracula, the Lord of Darkness. Nothing will change until Dracula disappears. The dusk is about to end, and his drink as well. It's almost time to leave. A modern pub frequented by young people. At the moment, there's some catchy music playing. The only thing out of place is Elian, and he knows that. It's time to go. You have reached pub. पागल लोग, भैया म्यूजिक का आवाज भी बहुत कम आ रहा है और आ भी रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने वो लगा के रखा है NCS. Glass. Elian's favorite booze was inside. Bartender. Elian pays the bartender. Bag. Younger bag. Inside Elian's wide bag there are many ancient weapons, like the legendary vampire's bane sword. But, especially nowadays, it's not a good idea to show them in public. Elian is officially a hunter, but actually he also hunts creatures of the night, like vampires. In any case, he still... Bartender. Bag. Young guy, young woman. To the glass. To the village. It's a calm place compared to most cities these days. Yet technology has arrived even here. Elian can see on the horizon Dracula's castle. Humans can't see it, but he's a Dampier, and that's his destination. You have reached village. Citizens. Fountain. Meta guy. To the pub. To the castle of Dracula. To Meta guy. A strange guy who wears a hood. He gets close to Elian and introduces himself as Meta guy. Then he tells him that he will give Elian some good advice. First of all, he tells him that the secret of a good exploration is to examine an object many times, possibly later. Meta guy also asks Elian if he knows what turning around means. Elian is a bit perplexed. The guy goes on to say that it means that if he explores a map going forward and right after he goes backward, that means that he has turned around. The same happens if he goes backward and then forward. He urges Elian not to forget this advice. Turning around यानी कि अपने घूमने की डायरेक्शन चेंज करना. To the pub, to the castle, citizens, to the castle of... What Elian sees when he enters is a huge room with a gothic look. 4 strong creatures are waiting for him. But Elian doesn't hesitate and draws his sword. His glare is just as sharp. You have reached main hall. To the library, statue. A huge and majestic statue of a gargoyle is placed in the center of the hall. Elian won't let his guard down. It could be an actual monster. Manticore. Manticore is approaching Elian, a giant creature with a human face, the body of a lion and a long scorpion tail. Monsters that can attack from many directions or that can grab Elian
can be defeated faster dodging them. Battle begins. The battle ends. Alien gains 150 experience points. Alien gets blood vial. Statue. Giant armor. The giant living armor starts to move. It raises its shield with the left. Battle begins. The battle ends. Alien gains 200 experience points. Double tap to statue. Dragon. A dragon stands before Alien. He's charging his fire breath and prepares to burn him to ashes. This is a versatile... Alien gains 250 experience. Statue. Dark Knight. Entrance door. Dark Knight. The Dark Knight now gets his lance and is ready to fight. He seems quite confident and fast as well. Battle begins. Alien gains 300 experience points. Alien gets blood vial. Double statue. Entrance door. Statue. A huge and majestic statue of a gargoyle is placed in the center of the hall. Alien won't let his guard down. It could be an actual monster. A huge and entrance to the library. Statue. To the library. Entrance door. To the library. Alien slays hordes of monsters along his way. No one can stop him. Now a library stands before Alien. It's a wide area. Many piles of books are on the ground, but despite the mess, there's no trace of dust. Actually, even the books. Page 1 of 2. Default page. 1. Reasons. 1. Hell Hunter. Close. Hell Chat. Who. 1. Who. तो दोस्तों ये था इसका वो एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कितनी लंबी हुई है TikTok 5911 out of pager window Samsung capture you दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है लेकिन हम वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे Hell Hunter folder open अब हम Hell Hunter damn soul इसका landscape बैटल सिस्टम Hell Hunter damn soul game view Hell out of Hunter. pager Damned Soul. talk back off Move among the options in the main menu with swipe left and swipe right. Then tap 2 times to select an option. दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो तो नहीं हो सकती 1 घंटे की इसमें New game. Load game. Credits. चलो क्रेडिट्स देख लेते हैं Hell Hunter. Damned Soul. A game by Giovanni De Bita, aka Tanker Rider. Game design by Giovanni De Bita. Programming by Giovanni De Bita. Framework software by Massimo De Pasquale. Story by Giovanni De Bita. Sound design SFX and music by Francesco Zaniboni. Giovanni De Bita. Freesound.org and Pro Sound Effects. Test by Jackson Blackford, Douglas Gallo, Audio Games Tutorial, Western Wright and Giovanni De Bita. Voice by David McCallion. Store icon art by Federico Fabri. Administrative direction by Mirko Venturi. Mobile porting by Matteo Maniconi. More Games Studio. Special thanks to Andrea D'Angelo. Audio Games Tutorial.
an audio game made and produced by Audio Games Association. अगर किसी को मालूम नहीं ऑडियो गेम्स ट्यूटोरियल कौन है तो भैया एक यूट्यूबर हैं वेस्टर्न के, उनकी वीडियोस में देखता हूँ और वो गेम खेलते हैं। Move among the options. Exit game. Buy new game. Buy the full game. नहीं काम करेगा ऑप्शन दिखा देता हूँ क्या होता है इससे। New game. Buy the. Hello, I'm Tinkerrider, developer of Hellhunter. The demo ends here, but if you want, you can press the button in the center of the screen and buy the full game. ठीक है, बाय द फुल गेम के लिए मैं इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। प्ले स्टोर पर खुलेगा ये। Talk back on. Google Play Store. The item that you were attempting to. Error. Heading. Error. Heading. The item that you were attempting to purchase could not be found. Got it. Button. Collapse. Got it. Hellhunter. Damn soul. Draw. Game view. भैया Talk back off. अरे तो DS की आवाज़ है ना, मैं पहचानता हूँ इसे। एक्चुअल में गेम की मॉन्स्टर ही है। Talk back on. Game view. Home. Home. Recents. Discord. Hellhunter. Close. Advanced option. Home. Portrait. दोस्तों इसके अंदर भी सेम ही बैटल सिस्टम है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है।